First there are Venn diagram. First part Venn diagram છે મને કયો જેનિકા હવે માઇક ઓપન થશે બેટા જેનિકા હા કયો હવે માઇક કયો બધું બંધ થઈ ગયું. Come on Jia Savla, can you help me Jia Savla? हाँ sir. What is Venn diagram? Systematic representation. Yeah, systematic नहीं diagrammatic. Sorry, Oh. diagrammatic representation. Of a Venn diagram. The compound statement is nothing but known as Venn diagram. Can you help me? Why, Jia Savla? Why, where, when is used? When used किया है? सर तुम्हारा आवाज नहीं आवतो. हाँ, when क्यों use किया है when? Because it was invented by John something. When. हाँ, John Venn इसलिए नाम है. बाकी कुछ काम का नहीं है ऐसा. खाली symbolic presentation, not symbolic, diagrammatic presentation of a compound statement. How many types of Venn diagram are there? Umangi, how many five types of Venn diagrams are there? Come on, Divas, what is the first step of Venn diagram? Divam, not Divas, Divam. What is the first step of Venn diagram? No, अरे सर वो मार्क हाँ, are you no X or Y? ठीक है, no X or Y. No X or Y is the first step of Venn diagram जहाँ पर कोई भी X Y नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है. X भी अलग है, Y भी अलग है. डायग्राम मान पड़ा और दोनों के बीच में स्टेटमेंट क्या लिखने का कि X intersection Y is equal to empty set. X intersection Y is equal to empty set. Come on, example solve करेगा. We have to solve the example. Take out the textbook, page number 22, first 5 questions. Take out the textbook, first 5 questions. सर ये लिखना है. ये लिखना है ना आपको. ऊपर हेडिंग लिखो वेन डायग्राम. लिखो हेडिंग वेन डायग्राम. हेडिंग लिखने के बाद लिखो डायग्राम बनाया मुझे एમાં બોક્સ નો ઓલામાં ઉપર શું લખ્યું છે ટોપ રાઈટ કોર્નર પર? क्या बॉक्स ना ऊपर यू मतलब यूनिवर्सल सेट. यू मतलब यूनिवर्सल सेट. कैसा वेन डायग्राम में लिखते हैं सेम ऐसे ही लिखने का वेन डायग्राम में लिखते हैं. सर હું ટેક્સ્ટબુક લઈ આવું છું વિડિયો બંધ રહેશે. ટેક્સ્ટબુક मतलब मेरा वाला बुक है भाई. સર ટાઈપ 1 પછી લખવાનું ચાલુ કરી દઈએ કે ટાઈપ 1 અને બાકી ટાઈપ્સ માટે જગ્યા છોડીએ. टाइप 1 फिर एग्जांपल, टाइप 2 फिर एग्जांपल ऐसा करेंगे. कम ऑन, टाइप 1 खत्म होने के बाद राइट डाउन द एग्जांपल्स. कम ऑन, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल मनु भाई. ओ मनु भाई. No politicians are corrupt. Yeah, the first one is no politicians are corrupt. यहाँ पर दो स्टेटमेंट है. Can you see which two statements are there? One is about politician, one is about corrupt. These are all people. Politicians are also people, corrupt are also people. तो यहाँ पर आपको 3 सेट एज्यूम करने का है. You have to assume 3 sets. Which 3 sets? Solution. Let लिखने का. Let capital P और capital X, capital Y जो लिखने का है. Capital Q and universal set. Anybody what I can say is P. P मतलब this is the people. So I can say set of all politicians. Set of all politicians. Q आएगा. Set of यहाँ पर all आएगा. Set of all corrupt people. Corrupt people. And ये सब people है तो set of all people. Universal set में set of all people. And after writing this, we should write Venn diagram. And Venn diagram perfectly solve draw करने का. स्केल पेंसिल लो. सर्कल अगर आपको इज्जत से ड्रॉ करने को आता है तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन ड्रॉ. बाकी स्केल पेंसिल लेना जरूरी है. ब्लैक पेन भी अलाउड है. कॉमर्स स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन यू कैन यूज पेंसिल और ब्लैक बॉल पेन, not a gel pen. Black ball pen is allowed.
When I always advise to draw with pencil only, कुछ रब करने का होगा तो बॉल पेन से फिर रब नहीं होता है. सर एक तो मिनट make it- ऊपर करो ना. एक मिनट करता हूँ. तो ऐसे दो डायग्राम ऐसे बनाएगा. ये यूनिवर्सल सेट है. This is all. P मतलब politician. This is Q मतलब all corrupt people. And the final statement P intersection Q is equal to empty set. This is my first answer. एक मिनट रुको. फर्स्ट सम ड्रॉ करो. सिस्टमेटिकली ड्रॉ करो. जैसे जैसे मैं ड्रॉ करना. जिसने बुक थोड़ा क्या ऊपर लो है ना. उसको भी आके मुझे दिखाना पड़ेगा. ये सर टाइम 1 सेकंड में आओ चार्जर ले. ડાયાગ્રામમાં અંદર જે PQ છે U છે એ બધું તો પેનથી જ લખવાનું. हाँ બધું पेन थी. अगर पेंसिल से ड्रॉ करते तो पेंसिल से लिखने का. डायग्राम के अंदर यू कैन यूज आइदर एंटायर पेंसिल और एंटायर पेन. आधा पेंसिल आधा पेन भी चलता है. कोई भी चलता है. लिखने का पेन से तो अच्छा. सर वो इज इक्वल टू के बाद जो है उसका मतलब क्या? मतलब एम्प्टी सेट दस नथिंग इन कॉमन. एम्प्टी सेट कुछ कॉमन नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट. नल सेट मतलब नथिंग इन कॉमन. સર આપણને શું ખબર કેવી રીતે ખબર કે બધું કોમન કેવી રીતે મળશે? મતલબ પોલિટિશિયન અને કરપ્ટમાં સમજાણું પીપલ છે, પણ સર્કલ્સ અને પોલિગોન્સમાં શું કોમન છે? मतलब બે अलग अलग सर्कल કેમ ડ્રો કર્યા? મતલબ એમ નહીં, હું તમને કહું છું કે યુનિવર્સલ સેટ છે એનો છે કેવી રીતે ખબર પડશે? आपका आप लोगों को डिसाइड करेंगे बेटा. कभी भी पीपल होगा ना तो सेट ऑफ ऑल पीपल लेने का. So this is the entire box is people. These are the black. P1 is a politician. The P1 is the politician, and outside the circle of politicians there are people. And Q मतलब corrupt people. ऐसा. हमेशा people ही लेने का. जहाँ पर भी people आएंगे. Come on, second सब में क्या करोगे आप? What will you assume P, Q and R? R के U R नहीं, sorry. P, Q and U. U में से all set of all shapes. What is P? You can assume. Set of all. P set of all circles. Very good. What is Q मतलब? Set of all polygons. Set of all polygons. And U मतलब? Set of all shapes. Set of all. Shapes. You can add geometrical figures. Set of all figures. Set of all shapes. Whatever you want to draw. Come on, same Venn diagram. Come on, same Venn diagram you should draw. ઓલું જે સેન્ટેન્સ છે એ લખવાનું જરૂરી નથી ને? P, Q, R. ના ના, નો સર્કલ્સ એન્ડ પોલિગોન્સ. ક્વેશ્ચન વાળું સેન્ટેન્સ. Question. હા. पर लिखो तो अच्छा. एक लाइन तो है, बाकी कोई जरूरत नहीं. लिखो तो अच्छा. ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. करो समझो तुम बेटा. हाँ बस फर्स्ट वाले. चलो फटाफट करो बेटा. 20 सम सॉल्व करने का है. ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 होगा. થઈ ગયું સર, થઈ ગયું. નીચે ये क्वेश्चन नंबर 2 है. Come on, what will you do in question number 3? સર રૂકો, ડાયાગ્રામ બનાવવામાં વાર લાગે. अरे हाँ सॉरी. करो भाई करो. कोई बात नहीं. Make it properly. Make it systematically. सर બધામાં સેમ જ ડાયાગ્રામ છે તો હમણાં હવે રહેવા દે, વાપસ करता वापिस करता फिर यहाँ पर मैं दिखाने को बुलाऊंगा ना, फिर आप नहीं आओगे ना, तो फिर मैं आपको लेक्चर में नहीं बिठाऊंगा. अभी आप बैठ के करो क्या? चेक થઈ ગઈ હોય તો પાછું બોલાવીશ ચેક કરવા માટે. એને તો હજી વાર છે ને. next week. Every alternate week you have to come and show.
वो तो आने का है बेटा, आप लोग फिर क्या मालूम काम क्या करेंगे नहीं करेंगे। चलो थैंक यू। थर्ड सम में क्या लिखोगे? PQR, no artist is poor, what will you write? Let P be artist. Set of all Q. artists। Let Q P be मतलब set of all artists. मतलब Let Q be set of all poor and people, poor Q, people, poor people, and you set of all people. very nice Manan Patel, very nice, fantastic। पूरा 50 बीजो का है ना बाजी टाइप 2 हाउस है। कौन सा बेटा? एक मिनट रुक जाना, मेरा यहाँ बिल्डिंग में इतना आवाज लगता है मैं गाड़ी का। हाँ वो क्या हुआ बोला? फिफ्थ टाइप 2 है ना बाजी। ना ना ना, फिफ्थ सूरी सेम जे 6 हाँ 6 सॉरी 6। तेरा हो गया? थर्ड हो गया बेटा? हाँ थर्ड था ये। फोर्थ में क्या किया? फोर्थ में क्या लिखा? फोर्थ में P ने सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स લીધું। પછી Q ने सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स લીધું અને यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर्स। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। वो मेरा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। डायग्राम सेम आएगा, डायग्राम के नीचे लिखना कंपलसरी है कि P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू MP से। क्या लिखा आशमी? क्या लिखा? हो गया आशमी? डन ऑल 5 सम्स। आशमी बदर हो गया? हाँ विच सम? फोर्थ। कमन फास्ट बेटा। फोरम मालविया थैंक यू, फोरम मालविया। फिफ्थ क्वेश्चन थैंक यू। what will I PQR PQU? શું લખશો PQ અને U? ફિફ્થ ક્વેશ્ચન માં ક્વેશ્ચન શું છે? ફિફ્થ ક્વેશ્ચન જરા માઇક ચાલુ કરે, હાય તો બોલ। What happened for a Malviya? ચાલુ કરો, માઇક ચાલુ કરો। नहीं बोलो केवा लोग। देवांशी हो गया फिफ्थ सम? No sir, I'm on 4th. Okay, Nishita take Now fifth sum। Anybody, what will you take PQ U in the fifth sum? Sir, P ma set of all cooperative industry, हाँ Q ma set of all proprietary firm and U ma set of all business. very nice, fantastic। business woman, perfect। अरे विदुषी proprietary firm मतलब શું? Proprietary firm એટલે જેનો ઓનર જે ઓન પોતે પર એક જ જણ ઓન કરે ઈ। very nice, very nice, very yeah, very nice, very nice। विदुषी fantastic। तो फोर्थ और फिफ्थ का सेम है ना डायग्राम? डायग्राम तो फिफ्थ तक का सेम ही है डायग्राम। ओके सर। खाली U V O लिखना है बहुत सिस्टमेटिक। Now it is type 2। Come on, type 2। Can I start? Type 2। એક મિનિટ સર ફિફ્થ માં શું કે લેટ કીધું? लेट માં વિદુષી બોલતો ફિફ્થ માં શું હશે? વિદુષી PQU। set of एक मिनट रुको set of हाँ बोल बोल। set of all cooperative industry
हाँ फिर Q में set of all proprietary firm और हाँ U में set of all business. हाँ कैलकुलेट बेटा thank you Prisha Doshi. What happened Pearl? सर एक बार फोर्थ सम देखो ना नेम यूज हो गया कयो फोर्थ वाडाમાં બોલ તો અંશ મહેતા શું છે fourth વાડામાં સર P આવશે set of all even numbers, Q આવશે set of all odd numbers અને universal આવશે set of all numbers. બસ અને બે ડાયાગ્રામ તો જેમ જ છે જેનો all integers તો ચાલશે વાંધો નહીં ચાલશે you can write सर बोलो फिफ्थ का यू क्या है set of all business firm come on type 2 please leave the sums अगर आपका बाकी है तो जरा जगह छोड़ दो and take a new page के type after leaving some space just write type 2 में આવશે all x are y's type 2 में आएगा all x are y's और ये इसमें भी ऐसा भी आएगा x implies y is the same thing x implies y is one the same thing all x are y's okay x implies y are one and the same thing all x are y's or x implies y are one and the same thing anybody can help me all x are y's का मतलब क्या x belongs to y all x are y's मतलब what universal sir એટલે x ના અંદર y આવશે ને x ના અંદર y આવશે કે y ના અંદર x આવશે સર y ના અંદર x આવશે मतलब એક જ હશે that is I can say here 100% x is a subset of y x is a subset of what y ક્યારે બી આવા વર્ડિંગ્સ માં આવે ને all x are y's मतलब पूरा का पूरा x is in the y everything of x is in the y सोचने का नहीं पूरा का पूरा x is a subset of y so how will you draw Venn diagram any idea how will you draw the Venn diagram here y નો સર્કલ એની y ના અંદર x y ના અંદર અને યુનિવર્સલ સેટ universal set હશે there will be one circle which will be y और उसके अंदर क्या आएगा x the common part always we have to share the common part always we have to set and here compulsory we should write x is a subset of y so copy down type 2 copy down type 2 all x are y's x implies y's the meaning is same पूरा का पूरा x is y what happened देवांश सुबानी बेटा सर एक्चुअली वाईफाई बंद है तो लैपटॉप से मैं लॉगिन नहीं हो सकता इसलिए फोन से और कैमरा नहीं चलेगा क्या फोन से तो क्या मैं भी फोन से ही हूँ मेरा टैब फोन जैसे ही है सर पर कैमरा बिगड़ गया है फोन का हट फोटा का सारा तो सेल्फी के लिए क्या सर x में शेड करवानू हाँ क्या बोल रहा है हाँ x2 हमेशा कॉमन पार्ट we have to shed always common part we have to shed always common part we have to shed ये पलक થઈ ગયું લખીને પલક થઈ ગયું હા થઈ ગયું નામ જ બેટી છે ભાઈ હવે આપણે 6 થી 12 કરવાનું 6 to 12 7 sums are there 6 to 12 come on Palak read the first question number 6 examples question number 6 बाकी बेटा तुझे all mathematics are into what all mathematics નથી all mathematicians છે mathematician hey what is the meaning of introvert घर घुसड़ा क्या बोल रहे हैं ज्यादा बात कर रहे कम बात करता है कम बात कर ये जो स्टेटमेंट है ना वो मुन्ना भाई के लिए नहीं है मुन्ना भाई को बोलता है मत बात करो डबल कहता है
Munat sir. What's P I can write? Palak, P क्या लिखूं? Set of all? Mathematician. Yeah, I can write set of all mathematician. क्या लिखूं? P Set of all introverts. people. Set of all introvert people. And people आया तो set of all people. अभी डायग्राम करने का. Venn diagram. कैसा आएगा Venn diagram में? It will be one big box, set of all people. This will be all introvert people. All mathematician, मतलब पूरा का पूरा अंदर आएगा P, बाहर आएगा Q, अंदर आएगा P और P में शेडिंग करने का और लिखने का यहाँ पर P is a subset of Q. This is how we can solve question number 6. This is how we can solve question number 6. सर बोलो. सर अभी तो आप बता रहे होते टाइप 1 है कि टाइप 2, बट बाद में पता कैसे चलेगा कि किसमें टाइप 1 करना है किसमें टाइप 2? हेडिंग लिखा है ना, हेडिंग बैठ करने का. नो एक्स आर वाइज, ऑल एक्स आर वाइज, ऐसा हेडिंग से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए. समझा नमन जैन? यहाँ पर तो मैंने उन्हें कहा परफेक्ट है. मैंने तो वो ऑर्डर में सिस्टमेटिक दिया ताकि मुझे इजी पड़े, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको खाली ऊपर का 5 वर्डिंग्स याद होना चाहिए. नो एक्स आर वाइज मतलब कुछ सेम नहीं है. ऑल एक्स आर वाइज मतलब पूरा का पूरा एक्स है ना वाई में घुसेड़ देने का. अभी आगे और आएगा. कम ऑन बर्थडे गर्ल. ओ बर्थडे गर्ल. एचा सलोड. हाँ सर. थैंक यू. 6 क्वेश्चन. हाँ 6 से 7 करो उसको. 7 का मतलब कि यू पी क्यू यू. पी मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. पहला क्वेश्चन बात नहीं है. अच्छा 7 था ना. हाँ 7 था. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हाँ मतलब रियल नंबर घुसड़ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो पहला यू क्या, पी क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. हाँ फिर क्यू क्या? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यू मतलब અને સેટ ઓફ ઓલ નંબર્સ. ફેન્ટાસ્ટિક બर्थडे गर्ल. वेरी गुड. भगवान दोस्त जी he is happy. क्या गिफ्ट देगा भगवान तू? हाँ भगवान. हाँ तो गिफ्ट देगा ना उसको कि नहीं देगा? अरे यार पकाओ नहीं. क्या तू फोटो में दिख रहा है? ब्लश तो हो गया. तो ना आसी सकूं. ब्लश तो हो गया तो गिफ्ट देगा. क्या देगा शेयर कर अंदर. चले दुनिया हो गया. 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ सर. कर क्या हिल रहा है इतना? चले जज शाह. ओ जज शाह मेरा देख कैसा फोटो दिख रहा है. तेरा फोटो देख कितना दिख रहा है. देख कैमरे में कितना दिख रहा है. जरा दिखना चाहिए ना पूरा बॉडी फेस. कैसा मालूम पड़ेगा? सिलेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है. सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है भाई. कम ऑन वत्सल शाह. ओ वत्सल शाह. यस सर. तेरा सिस्टमेटिक बेट. तेरा फोटो देख क्या दिख रहा है. तेरा करने का ना सिस्टमेटिक पे यार. कौन जिया शाह. ये सब शाह वाले ऐसे ही बैठे ले. हाँ जिया शाह. जिया सकी थे बेस. तेरा वीडियो दिखाओ जो ने बाहर ही दिखाई खाली. ईशान शाह. ओ ईशान शाह. हाँ सर. देखो इसका खाली माथा ही दिखता है बस. कितना सारा टेंड्रो है. पतंजलि यूज कर. हाँ सर 1 मिनट में करूँ सर. वो रिफ्लेक्शन वो आवे देखो. चलो बेटा चलो. 7 सब में क्या लिखोगे ऋषि गांधी? 7 क्वेश्चन बात थे क्यों? 7 थे क्यों? 8 क्वेश्चन बात तो. All equilateral triangles are isosceles. Let P be set of all equilateral triangles.
Q set of all isosceles triangles. Q set of all triangles. And a diagram same also. Very nice. Very nice. Come on, meta 3. Oh, meta 3. Which song? Thank you. Correct so much, beta. 10. 8th માં છે કે 9th માં છે? 10. Oh my god. એ 9 બોલ ચલ. P શું લખશે? A set Question of માં પહેલા. all professors are educated. Set of all professors. Set of all educated professors. नहीं. Set of all educated people. Professor फिर से repeat नहीं करने का. Open रखने का open. Set of all professors, set of all educated people અને last માં આવશે set of all people. ठीक છે? टिक करो उधर. Educated professor नहीं, educated people. And diagram same આવશે. ध्यान रखने का भाई. ओए प्रथम गजरिया. ભાઈ બોલ. તારો વિડિયો જો કેટલું ઓછું દેખાય છે ભાઈ. જરા સકીને દેખાવજો. હા, હવે ઠીક છે. બોલ પ્રથમ કયા સમમાં છે પ્રથમ ગજરિયા? સર 9. 9th માં છે. ચલો થઈ ગયું 9 થઈ ગયું. પ્રિયાંશ સીડિયા કયા સમમાં છે? વાત તો 10th માં શું કે ક્વેશ્ચન છે? સન્ડે સર 11th માં યુઝ આવશે. પેલા સન્ડે પેલા 10 તો જોવા દે. આવાજ વાજ. સન્ડે એક મિનિટ શું છે? નવી બુક લખવા માટે અત્યારે બોલ સન્ડે એમ્પ્લોયઝ હોલિડે મતલબ P as a set of all Sundays. P as a set of all Sundays. Q as a set of all holidays. And then U as a set of all days. Very good. Very nice. Set of all Sundays, set of all holidays, and a set of all days. Very nice. Very nice. Very nice. Come on, Tia Bora. Oh, Boravin. Yes, sir. 11 sum बताओ बेटा क्या पूछी बेटी? Yeah, 11th sum. बताओ question mark. If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. What will you write? P will be Set of all rhombus. Very good. Q will be set of all parallelogram. Set of all parallelogram. And U will be set of all quadrilateral. Very nice, बेटी. Very nice. The diagram same. Yeah. U मतलब set of all quadrilaterals. Then there will be Venn diagram. Sir, 12th sum तक જ કરવાનું છે ના? અત્યારે આ ટાઈપમાં 12th સમ છે. So this will be what will be this now? बाहर वाला आएगा, बड़ा वाला आएगा पैरेललोग्राम Q और अंदर वाला आएगा P. P को शेयर करने का and here लिखने का P सबसेट of Q. Come on. Come on, Devin Shade. Can you help me the next question, beta? 12th sum. 12th question. Read the question, beta, Devin. If n is a prime number and n is not equal to 2, then it is odd. So let P upon P मतलब શું? Set of all? Set of all prime numbers. Except 2. लिखने का except 2. Except. क्यों? How are you writing except 2? दिया है ना? 2 is only even prime number. हाँ, तो वो वहाँ पर लिखा भी है not equal to 2. So we should write a set of all prime number except 2. What is Q मतलब? Q set will of be all odd numbers. Very nice. U मतलब? Set of all numbers. डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम में यू शुड बी वेरी क्लियर. दिस विल बी वेन डायग्राम. This will be box set of all numbers. Here it will be odd numbers. That is Q. And अंदर also P prime number shading में. But 2 कहाँ पर आएगा? Where will be 2? It will be outside the Q. And equal to 2.
Okay. Take care. Sir, You should एक और write. 11 sum देगा सो. हाँ, 11 sum भी same अच्छी भाई. 11 sum आ गए. Set of all rhombus, set of all parallelogram, and set of all. सर 10th का यू दिखाओ ना. You set of all days. Set of all days. सर 12th और 1 मिनट માટે बताओ ना. સર 12th માં n is equal to 2 ના લખે તો આમ પણ યુનિવર્સલ માં કાઉન્ટ થઈ જાય ને. हाँ पर वहाँ पर लिखा है ना not equal to, इसलिए I just mentioned clearly कि it is a prime number except 2. देखिए बहुत है. मनोज सर आपने 12th सम में n इक्वल्स टू 2 क्यों लिखा उधर? नॉट इक्वल टू 2 बेटा, यहाँ पर आपने लिखा ना एक्सेप्ट 2, p में लिखा ना p प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, तो 2 आएगा कहाँ पर? p में नहीं आएगा, q में नहीं आएगा, वो बाहर आएगा ना, क्योंकि बाहर आएगा ना, q तो ऑड नंबर है ना, उसके बाहर आएगा. इसलिए दिखा है कि हाँ द पोजीशन ऑफ n इक्वल टू 2 बाहर है. ओके. तुमने मुझे मेंशन किया ना, इसलिए मैं लिखता हूँ, बाकी तो जरूरत नहीं. हेलो हेलो, कैन वी स्टार्ट विद टाइप 3? ना सर 1 मिनट. हाँ 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट. सर 1 मिनट 11th क्वेश्चन दिखाओ ना. ये रहेगा सेम ही. रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स. સર અગર એક્સેપ્ટ 2 નહીં આપ્યો હોય તો ઇન્ટરસેક્શન થશે ને? હા તો નહીં સેમ જ થશે. ડાયગ્રામ તો સેમ જ આવશે, ખાલી ત્યાં n2 નહીં લખવાનું. નહીં તો પછી પ્રાઇમ નંબરમાં 2 પણ આવશે ને, તો ઇન્ટરસેક્શન થઈ જશે. બધા 2 થોડી ઓડ નંબર છે. એટલે એ લોકો આપણા ઘરનું તો આવશે ને બેટા. આ સ્ટેટમેન્ટમાં પ્રાઇમ નંબર હોય ને તો બધા પ્રાઇમ નંબર ઓડ જ હોય એક્સેપ્ટ 2. એ કેવા માંગે છે, એટલે આમાં લખીને આપશે જ એક્સેપ્ટ 2. એટલે નોટ ઇક્વલ ટુ લખીને આપશે જ. કરી લો ફોન ભરી રહે જલ્દી કરી કરે. दूसरे नंबर से कर. चलो हो गया. ओके, राइट डाउन 12 सम हो गया आपका. राइट डाउन टाइप 3. સર 12th માં આપણે બાજુમાં નહીં લખશું p is a subset of q? हाँ लिखने का ना बेटा, वो भूल गया. Now this is type 3. Type 3 में આવશે all x are y's, all x are y's and all y's are x. यहाँ पर ऐसा भी आता है x double implies y. That is what आता है, if and only if.
इसका मतलब क्या? Anybody can help me? What's the meaning of this part? सर इसमें एक ही सर्कल रहेगा इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x. Very nice. एक ही सर्कल आएगा. Fantastic. Venn diagram में यहाँ पर I can say here 100% दोनों सेट्स इक्वली है और आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो there will be only one circle and in this circle x will be equal to y. और वहां पर लिखने का नहीं, अपन सर्कल में लिख दिया x equal to y, तो डायग्राम के बाहर लिखने का जरूरत नहीं. This is my type 3. And type 3 है only 3 questions. That is 13, 14 and 15. Oh my God. 13, 14 and 15. સર 12 લખવાનું. કેમાં? 13 क्वेश्चन માં? ના આમાં જ x is equal नहीं, to y લખવું પડશે. वो सर्कल में लिख दिया ना x equal to y, फिर बाहर लिखने का जरूरत नहीं. x is equal to शेडिंग करने का नहीं, दोनों ओवरलैपिंग है, बट नो नीड ऑफ शेडिंग आल्सो. अगर आप शेड करो तो फिर we cannot see x equal to y, खाली लिखो x equal to y. Type 3. Sum number 13, 14 and 15. All x are y's and all y's are x. और x डबल x. कहीं शेड नहीं करने का, बस खाली x equal to y. ना शेड नहीं. तो 13 क्वेश्चन માં આપણે જેવી રીતે સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરતા હતા એ કેવી રીતે? फ्रेम थोड़ा अलग है. 13 क्वेश्चन थोड़ा अलग है. See the example. Example question number 13. इसमें solution I can just assume let P, Q and U. क्या क्वेश्चन क्या? India will be prosperous if and only if the citizens are hard working. If and only if each citizens are hard working. So I cannot write set of people of India. Actually, I can just write India prosper. India जो wordings है ना वो लिखना will be prosper. Mama used to also citizens of India. Set of all people. Set of all people खाली बस. और वहाँ पर आएगा Q में क्या लिखेगा? Indian citizen are hard working. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना. And you मतलब set of all people. अभी Venn diagram. Venn diagram में एक सर्कल आएगा set of all countries. इसमें इंडिया आएगा. Set of all people. All x's and y's માં નંબર સેમ હશે પૂરા, मतलब x નો કે હર એક એલિમેન્ટ સેમ હશે? मतलब हर एक ऑल ओवर જેટલા હોય ને નંબર હશે. x p equal to q लिखने का. सब इक्वल. One circle. This is Indian prosper and these people are hard working. So here p equal to q. Exactly. That's all. Getting Meera Ben? Oh, Meera Nasa. Yes. बोले बेटा डर लग रहा है क्या? हाँ मीरा, नहीं ना, गुस्से में नहीं है ना, गुस्से में नहीं है. गुस्सा नहीं करने का किसको भी. चलो मीरा, can you help me for the 14th question? Can you help me for the 14th question? Read the question. Are rich if and only if they have a Ferrari. People are rich if and only if they have a Ferrari car. What is P मतलब? People are rich. Set of all rich people. Yeah, set of
Q मतलब very good. And what is U? U मतलब all people. क्या वीडियो बंद रखे नहीं बोलेगा शर्मा जैसू? Why are you so shy? बिंदास बोलेगा, टेंशन लेगा नहीं. बराबर है. Pima people are rich. Qma set of people who have Ferrari car. Set of people having Ferrari car, set of all rich people, set of people having Ferrari car, and set of all people. ये तीन आएगा. और डायग्राम सेम ही आएगा. Set of नहीं आवे ना अब. अरे रखो ना set of. We can have managed properly. Set of all rich people, set of all people having Ferrari car, set of all people. That we can do. Come on, 15 question. Help me. Shelly Gelani. बोलो बेटा. माया बोलो. 15th question is all teachers are scholar and scholars are teacher. So the P will be all teachers. Set of all teachers, very nice. What is Q? Q will be set of all scholars. Very good. And U will be set of all people. Very good. Diagram will be same. Very nice. Yeah, Maya. Any doubt, Maya? Sir, in type 3, if we exchange P and Q, it is okay now. If we exchange, yeah, no issue. We are equal sets only, so we can do that. Matlab, it is not necessary that we should use only P and Q. You can use MN, you can use XY, you can use AB. Whatever symbol you want to use, you can use. But exchange of the statement, but the first statement to compulsory P, second to Q. So upper niche you can do here. 15th no use was that. Set of all people. Teachers are people, scholars are people. Set of all people. P matlab set of all teachers. Q matlab set of all scholars. So U matlab set of all people. Come on, Prisha Doshi. आएगा Prisha Doshi. हाँ सर. क्या से? क्या समझ है Prisha Doshi? आवाज નથી આવતો આમાં જ બોલે છે. 15th વાળામાં પાછું બોલો ને. 15th પઢું બેટા. હા set સર. of all teachers, set of all scholars and a set of all people. Okay, thank you sir. Hello beta. Next question. Now next question is type 5. Last type, today's class type 4 type. Okay. Type 4 बेटा. ये बहुत मस्त पार्ट है. Here it is sum. Please pay attention, better. Second last type. Sum x are not y. Sorry, not name. Sum x are y. Can you help me? इसका मतलब क्या? Sum x और y इसका मतलब? Intersection वालू diagram mouse. Diagram mouse. There are two situations. There are two cases here. There are two cases. इसमें there are two cases. A है और B है. Please pay attention all of you. A और B अलग है. पहले वाले में A वाले में I can say that कि X जो है it is not a subset of Y nor Y is a subset of X. मतलब कोई subset नहीं है. कोई इसका subset नहीं है. अगर ऐसा situation आया when no one is a subset of each other, then diagram में कैसा होगा? There will be two intersecting circles. There will be one circle X
there will be second circle Y and the shading part will be there. This is U. मतलब here X intersection Y have something common. It's not equal to empty set. It's not equal to empty set. पहला चेक करवानू P અને Q दो स्टेटमेंट लेके चेक करने का सबसेट पॉसिबल है कि नहीं. सेकंड हमेशा फर्स्ट चेक नहीं करेगा. सम एक्स में ना, सम एक्स में नहीं, सम एक्स आर वाइस में फर्स्ट पार्ट नहीं चेक करने का, सेकंड पार्ट चेक करने का कि वो सबसेट है कि नहीं. अगर सबसेट है, the second part is a subset of first part. If the second part, if a second statement, if a second statement is a subset of first statement, second statement is a subset of first statement, then diagram will be some different diagram. Any idea which diagram? Y and X. X Constant circle would would be be inside X. there will be X circle and in the X circle there will be Y circle. ऐसा आएगा. Here also 100% you can see here कि Y is a subset of X can write. तो ये मेरा type 2 है. This is my type 4, not 2 type 4. There are two possibilities. There are two possibilities. There are two possibilities. खाली चेक करने का सेकेंड वाला सबसेट है कि नहीं. वो अभी एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको मालूम पड़ेगा. अभी मैं आपको एग्जांपल फर्स्ट कॉपी डाउन दिस मच, देन आई एम गिविंग यू एग्जांपल. एट दैट टाइम यू कम टू नो कि डायग्राम ए आएगा कि डायग्राम बी आएगा. સર તમે એકવાર રિપીટ કરશો, મારું નેટવર્ક ચાલુ છે. હા રિપીટ કરું. ફોર ટાઈપ છે. ફોર ટાઈપ નું હેડિંગ આવશે સમ એક્સ આર વાઇઝ. સમ એક્સ આર વાઇઝ માં બે સિચ્યુએશન પોસિબલ છે. એક સિચ્યુએશન માં કોઈ भी કોનું સબસેટ નથી, मतलब दो both are some different part. So there will be a first type of diagram when subset relations are not possible, and if subset relation possible तो second diagram B वाला diagram आएगा. सबसे मतलब compulsory second should be a subset of the first part. Second should be a subset of first part. Second should be subset of first part. ध्यान रखने का. प्लीज डायरेक्ट फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर वो हिसाब से आप एग्जांपल समझो और फिर ट्राई करो. સર આ ટાઈપ 2 જેવું નો થઈ ગયું, કેસ 2? हाँ टाइप 2 हो गया, टाइप 2 जैसे हो गया. સર મારા ટેબ માં ચાર્જિંગ નથી અને આઈ ડોન્ટ હેવ ધ ચાર્જર, તો મારા ફોન થી જોઈન કરું છું. ફોન શું નામ છે? કીપ કમાની. Okay, let me give the example. Ready with the example? Ready with the example? See, मैं बोलता हूँ. Okay, एक मिनट. हाँ भाई साइड एक मिनट. चलो बताओ मुझे, मैं बोलता हूँ some NRIs are rich. Some NRIs are rich. पहले उसमें P क्या आएगा, Q क्या आएगा? आरो मालविया P क्या आएगा? Some NRIs are rich में P क्या आएगा? Set of some NRIs. हाँ, not some नहीं आएगा. All आएगा. NRIs. नहीं, Set of NRIs. And what is Q? Set of rich people. बताओ, is it P लिखा set of all NRIs, set of NRIs, and Q लिखा set of all rich people? Is it Q subset of the P? Is it rich मतलब NRI only? No. Which diagram? First diagram, second diagram? First. First, there will be two intersecting circle diagram. There will be two intersecting. ये लिखना नहीं है, खाली समझो. Try to understand the sums because people make 90% people make mistake in this type 4 only. कि ये intersecting draw करने का के concentric circle draw करने का. Come on, next one. I am giving you some. आवाड़ो एक बार पार्टी समझाओ. तू समझ रहे हैं? Some poets are intelligent. Some poets are intelligent. बोल तो विदुषी, बोल तो क्यों से P क्या आएगा, Q क्या आएगा? Set of all poets. This is set of all poets.
Okay. Set What? of all intelligent people. हाँ, this is P मतलब set of all poets. Q मतलब set of all intelligence. क्या हो रहा है? Set of all intelligence. मुझे बताओ, is it Q subset of P? Is it all intelligent are poets only? हाँ? जोर से बोल, हाँ के ना? नहीं P intersection Q. हाँ, मतलब ऐसा वाला आएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, बराबर है? आश्मी बता क्या जुए છે બેટી, કોણ છે બાર? કયા પશુ પક્ષી બહાર અવેલેબલ છે, બહાર જોવે છે? હા, તું મને કે some integers are natural numbers. What is P and Q? Ask me. What is P and Q? P is integer, set of integers. And Q is the set of natural numbers. So is it natural number subset of integers? Yeah. Yes. All natural numbers are integer? No. All integers are natural. All natural numbers are not integer? No, wait. All natural numbers are integers. So what I'm saying, so is it Q subset of P? Yeah. अक्षु सर्किटे बोल, હું તને શું પૂછું છું? आपने P integers लिया, Q natural number लिया, मैं पूछ रहा हूँ, is it all Q subset of P? मतलब is it all natural numbers are integer? Yeah. के ना? Yeah, yes. Which diagram? First diagram, second diagram? Second diagram. There will be integers and inside integer there will be Q. बराबर है? Yeah. ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, बाहर नहीं जो कौन? बंसी जोशी कौन से बाजू में? बंसी बाजू में कौन से? सर बेन છે. બેન ને કે વણું 12th માં જોયા યાર, તારી બેન મોટી નાની? નાની છે. એ તો નાની છે, સાઈડ માં રહે હવે. बताओ बंसी जोशी, some real numbers are, अरे यार अक्षर खराब था क्या थोड़ा. Some real numbers are integer. बोलो શું આવશે? P શું આવશે? P क्या आएगा? बंसी जोशी. Set of all real numbers. Q क्या आएगा? Set of all integers. Is it all integers are real number? Is it all integers are real number? नहीं. हाँ के ना? जल्दी. हाँ सर हाँ. यार आप लोग को नंबर सिस्टम भी नहीं आता है. Which diagram? सर्कल के टू इंटरसेक्टिंग सर्कल. सर्कल के अंदर सर्कल आएगा. This will be P, this will be Q and shading part will be this. ये समझना बहुत जरूरी है. some people still making their video off. कितनी बार समझाता हूँ मत रखो वीडियो ऑफ. क्या वीडियो ऑफ रहता है तो आप लोग किधर बाहर ध्यान देता है. यहाँ पर मैं आप लोग को देखते रहता हूँ लेकिन आप लोग का ध्यान किधर और रहता है. Come on, help me. Sum number 16. Come on, start example number 16. 16 sum क्या है बेटा? बात तो यश हो रहा. Some even numbers are multiple of 7. Yeah, some even numbers are multiple of 7. What will be P beta? Set of even numbers. Set of even numbers. Okay. एक मिनट लखो છું. Solution. Let P मतलब. सर आमा all नहीं आ गया. हाँ लखो ने. Set of all even numbers. What is Q मतलब? Set of numbers which are multiple of 7. All numbers multiple of 7. So is it all multiple of 7 or even number? Yes, No. Which type of diagram? First diagram, second diagram? First diagram. Set of U मतलब क्या? Set of all numbers. Set of all numbers. Come on, Venn diagram draw करो. Venn diagram also there will be a box. This will be universal set. There will be two circles, even number circle
number multiple of 7 number, and the shading part will be the common part, and here it will be P intersection Q is not equal to empty set. This is my first diagram. सर बोल बेटा। सर 19 सम टाइप 2 नहीं है क्या? 19 सम उल्टा पड़ेगा तो टाइप 2 आता है। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर तो टाइप 2 आता है। डायग्राम सेम आएगा और टाइप 2 में वर्डिंग्स में ऐसा आएगा ऑल इंटीजर्स आर रियल। अरे તમે મિક્સરનો અવાજ હતો છે ને? હા સર મારા ઘરે નથી આવતું. અરે મારા ઘરેમાંથી આવે સમજતા નથી યાર। એટલે ઘરથી લેવાનું નહીં પણ આજ क्या वो एनवायरनमेंट खराब है ना। बोलो बोलो क्या आएगा कैसा है? તો સર બેવ રીતે આપણે ડાયાગ્રામ કરી શકીએ ને? क्या बोल रहे बेटा क्या बोल रहे? सर दोनों वे में हम डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बेटा सेम ही होगा दोनों में से, पर क्वेश्चन अलग रीत से आएगा ना उसका। क्वेश्चन विल नॉट सेम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से डायग्राम आएगा ना। क्वेश्चन देखने का उसमें। तो नेक्स्ट वन हेल्प मी पूजन बेटा हेल्प मी। ओ क्रिकेटर સર વાઈફાઈ વયો ગયું છે તો હું શું કરું? હું મોબાઈલ થી બેઠો છું। હા તો બે વિડિયો બનાવું તો ચાલશે? હા હવે બે ચાર ક્વેશ્ચન બાકી છે। નીર ને પૂજન વાત તો 17 ક્વેશ્ચન। Some students are lazy. What is P? Set of students. A હા બરાબર છે। Q set of lazy students. Lazy people બોલવાનું। Lazy people. અને U set of all people. Yeah, set of lazy people. तो इसमें बताओ मुझे P is it lazy people मतलब खाली स्टूडेंट्स? Is it Q subset of P? Is it lazy मतलब खाली स्टूडेंट्स? ना ना P is a subset of तारी बड़ी छोकरी टकली करी ना क्या पागल है क्या? स्टूडेंट्स तो लेजी होते क्या? मतलब आप लोग स्टूडेंट्स ऑफ लेजी क्या? lazy people આટલા બધા છે એમાંથી આટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે તો अरे P થઈ मतलब શકે। કહેવાનો मतलब इंटरसेक्शन છે ને बेटा वही मैं बोल रहा हूँ। આનો સમજાણ ऑल पीपल ये ना डाउट कुछ भी फालतू डाउट पूछना जरूर होता है। क्यारे भी આવી રીતે સમ આવે ને ચેક करो सेकंड सबसेट है क्या फर्स्ट का। सेकंड सबसेट है क्या फर्स्ट का। अगर सेकंड सबसेट होगा ना तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकंड मतलब चेक करो इज इट लेजी मतलब खाली स्टूडेंट्स। इज इट लेजी मतलब खाली स्टूडेंट्स। हाँ के ना? नो 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 मतलब वेन डायग्राम में देयर विल बी टू डिफरेंट डायग्राम्स। Don't check from first to second. खाली check P, Q to P. So there will be a diagram in this manner. There will be one statement P. There will be second statement Q, and which का part intersection आएगा. And we should write P intersection Q is not equal to empty set. चलो मोक्ष यादव next question. Sum number 18. एक बच्चा वीडियो आपका जाना। બધાને છે ને વાયડા લોકો છે મનસ્વી સ્મિત આ લોકો બધા વાયડા લોકો છે। હવે નીર નું સમજા મને કીધું નીર તો ડિપ્રેશન માં છે ને ડિપ્રેશન થી નીર क्या बोल रहा है मनोज सर? ओ नीर हाँ सर तो बोल रहा है तू बहुत डिप्रेशन में है। नहीं सर क्यारे गयो જ નતો। तो क्या टेंशन लेने का नहीं। नो टेंशन लाइफ में जो होने वाला है वो होने वाला है। चल बेटा बात तो बेटा को 18 क्वेश्चन मसले से पी। સર મારું નેટવર્ક બહુ ખરાબ। अच्छा दिया बोल दिया टक्कर बोल। दिया टक्कर 18 क्वेश्चन। हाँ सर सर P 18 ने some quadratic equation have equal to so P is a set of all quadratic equation set of all quadratic equation પછી Q set of all equal roots हाँ set of all equal root equation के set of all equation or set of all equation equal roots yeah having equal roots અને પછી U मतलब set of all equation
चेक करो મને કેવો એમાં इक्वल रूट मतलब ऑल इक्वल रूट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट कभी भी आएगा तो खाली क्वाड्रेटिक में आता है, खाली क्यूबिक में नहीं आता है। आता है कोई भी इक्वेशन में रूट्स आर इक्वल इन एवरी टाइप ऑफ इक्वेशन रूट्स कैन बी इक्वल इट इज नॉट लाइक दैट। या अगेन देयर विल बी अ वेन डायग्राम में देयर विल बी अ इंटरसेक्शन वाला this will be P, this will be Q, U and this intersection part. And P intersection Q is nothing but not equal to empty set. Come on, Jainam Gandhi. 19 question mark to. Jainam Gandhi, beta, please mark to 19 question. Who are you, Jainam? Come on, Isha Nagi beta. Isha beta. Come on, help me 19 questions. Some real numbers are integers. Some real numbers are integers. Mane ki, what is P? Beta, what is P? Set of all real numbers. Yeah, set of all real numbers. What is Q matlab? Set of all integers. Check karo. Check karo. Is it integer subset of real numbers? Yes. Is it all integers a real number? Yeah, बराबर है। तो वो डायग्राम कौन सा है? फर्स्ट सेकंड? सेकंड। यहाँ पर आएगा सेट ऑफ ऑल नंबर्स और वेन डायग्राम में इट विल बी अ सेकंड डायग्राम। उसमें कैसे आएगा? देयर विल बी बड़ा वाला बॉक्स रियल नंबर का P, उसके अंदर Q, शेडिंग को Q करने का एंड U एंड हियर Q सबसेट ऑफ P लिखने का। Q सबसेट ऑफ P लिखने का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। Come on, today's last question number 20. Help me, Nishisha Lambu. Oh, Lambu. हाँ सर। हो गया 19 क्वेश्चन हो गया बेटा? हाँ। 20 क्वेश्चन बाद। Some rectangles are square. तो what will be 20 क्वेश्चन? P मतलब क्या? Set of all rectangles. Set of all rectangles. Okay, what is Q? Set of all squares. Yeah, set of all squares. Now check karo. Is it all squares rectangle? Is it all squares rectangle? There भी some आवे नहीं। The second set check करने का first में आता क्या नहीं आता all. What do you say, Nishi Lambu? Is it all squares rectangle? हाँ सर। Yeah, 100% all squares are rectangle. And set of all quadrilateral. Again, there will be diagram same way. Venn diagram, मासू से एक बड़ा बॉक्स आएगा, यूनिवर्सल सेट. दिस विल बी नथिंग बट अ रेक्टेंगल P, उसके अंदर आएगा स्क्वायर एंड शेडिंग पार्ट आएगा एंड Q सबसेट ऑफ P. ખાલી ચેક કરને કા જ્યારે બી સમ બનાવે ને સમ ત્યારે ચેક કરવાનું કે સેકન્ડ ફર્સ્ટ માં આવે છે કે નહીં પૂરું. અગર સેકન્ડ ફર્સ્ટ માં પૂરું આવતું હોય તો બી ડાયાગ્રામ और सेकेंड फर्स्ट में पूरा नहीं आता है तो फर्स्ट डायग्राम इंटरसेक्टिंग सर्कल आएगा।